ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापित विनभूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति श्रीपदाधिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुणवैष्णवाञ्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणमृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतपरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सन्निता श्रीविशाखावितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वंचा कल्पतरुभ्य च कृपा सिंधु च पतनं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासरि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः विष्णु पदाय कृष्ण नवमी भक्ति चालू। हरे कृष्णा सभी भक्तों को बार बार प्रणाम। मेरा परिचय बच्चे ने बताया, लेकिन मैं बम्बई से हूँ और वैसे बम्बई में सेवा किया कुछ साल और यहाँ पर कभी कभी आते रहता हूँ इस हिसाब से। तो आज हम हरिनाम के विषय में कुछ पढ़ेंगे, भगवान के हरिनाम का जो है दिन उसी हिसाब से, क्योंकि हमारे जीवन का जो उद्देश्य है, ये उद्देश्य यही है कि हरिनाम से हम इस भव सागर को पार करें। प्रभुपाद ने हमें दी हुई जो थ्योरी है सिंपल है, सिंपल, कोई ज्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि अनेक गुरु है, अनेक संस्था है, अनेक लोग है जो प्रचारक है, वो भिन्न भिन्न प्रकार से लोगों को भगवान को पास जाने के लिए बताते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने सिंपल कलित हरि कीर्तन हरे नाम ये वो केवलम, कलयुग में भगवान के नाम का जप सर्वोपरि है, ये सबसे बड़ा उत्तम मामला दिया। तो 4 नियम का पालन और कलयुग के जो, मैं इंग्लिश में भी बोलूंगा। अच्छा इंग्लिश बोले, मेरे से बोलूंगा। So, there's some people online, they can understand. So, we'll interpret in English as well. Yes, so you're speaking about how Srila Prabhupada has given a very, very simple method of going back to Godhead or reaching God, that is through chanting the holy names of the Lord. तो इसीलिए पहले तो प्रभुपाद जी ने हमें 4 प्रिंसिपल दिए हैं, जो कि सभी लोग जानते हैं। जो इस्कॉन में ज्वाइन होता है पहले यही सीखना पड़ता है कि नो मेडिटेटिंग, नो गैम्बलिंग, नो सेक्स, नो टॉक्सिकेशन, नो टी कॉफी दिखिल नहीं, और भगवान का प्रसाद ग्रहण करना है, और जो भी अपनी दिनचर्या है वो कृष्ण भावना में ही बिताना है। So he gave the 4 regulative principles that many of our devotees who have joined or anybody who comes first to the ISKCON knows about it. That is, no meat eating, no gambling, no illicit sex, no intoxication, including tea and coffee, and also to eat Krishna Prasad or offering food to the Lord before eating, as well as engaging your daily life with Krishna consciousness. क्योंकि कलयुग में हम लोग अल्प बुद्धि के जीव है और बहुत सारी थ्योरी बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद जी ने इतनी सारी थ्योरी नहीं दी है हम लोगों को, लेकिन सिंपल जो सबसे उत्तम है जो हम कर सकते हैं अपने दिनचर्या के साथ में। जैसे विदेश में हम लोग जो आए हुए हैं, हम देखते हैं कि इस देश में बहुत ही परिश्रम करना पड़ता है। हमारे देश में एक आदमी कमाता है और 10 आदमी खाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी थ्योरी नहीं है, ये बिल्कुल उल्टी है थ्योरी। प्रत्येक व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति को कमाना पड़ता है तब खाना मिलेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर जो है बड़ा अटूट ये है, परिश्रम से, और वहाँ पर लोग ये करते हैं। So
we can see that Srila Prabhupada has not given very lot of high philosophy and all. He has given very simple Krishna consciousness, that is by chanting the holy name. Like right now, we are all here in the West. We can see back in India or other countries, we can see if one person works, he is able to feed his entire family. But here in America, we see everybody have to work so hard that almost everybody has to work to support themselves. तो इसीलिए यार इस देश में कैसा भजन किया जाए, क्या किया जाए, कैसे क्या योग्य किया जाए, तपस्या किया जाए, ध्यान किया जाए, धारणा किया जाए, नहीं, श्री भगवान के नाम का जप, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करने मंत्र से ही हमारी सिद्धि प्राप्त होगी. So in this country like this, where we every day have to work very hard and all, how can we incorporate in our lives fire sacrifices or big deity worship or other rituals? So it's best and most simple thing is to chant the holy names of the Lord. क्योंकि सभी को हमें भगवान के धाम जाना है. प्रभुपाद ने कहा है, प्रभुपाद जी बताते हैं, जैसे अभी हमारे एक स्वामी जी जो देह से छोड़ा उन्होंने, तो उन्होंने एक लेक्चर दिया, वो लेक्चर मैंने पढ़ा. उन्होंने कहा कि हम सभी लोगों को बैक टू गॉड जाना है और ये फेस्टिवल में ज्वाइन होना है, तो इसीलिए हम लोगों को तैयारी करनी है. क्या तैयारी करनी है, कैसी तैयारी की जाए? So we all have to go back home, back to Godhead. Kadambakana Swami. His Holiness Kadambakana Swami Maharaj, who recently showed very nicely how we can leave this body. He left his body in Vrindavan. Just not even a month has been passed. And he told that how we all have to go back. There's a big festival. We are all part of it. And we all have to go back home, back to Godhead. So how can we prepare to go back? तो संसार में हम लोग आए हैं, हमारे साथ बहुत सारा जंजाल है, क्योंकि संसार का जो बंधन है ये बहुत बड़ी ही माया का जंजल है. पुत्र, परिवार, स्वजन, धर्म, जाति, बहुत प्रकार के चीजें हैं. इन सभी को छोड़कर अगर भगवान के सेवा में जाना है तो भगवान कहते हैं कि सब कुछ तुमको त्यागना होगा, और त्यागना बड़ा कठिन है, इजी नहीं है. भगवान ने कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम तो सर्व पापे मोक्षयिष्यामि मा शुचः. सोच मत करो, लेकिन इस सोच मत करो इस शब्द को गंभीरता से पालन करना बहुत 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 कठिन है. So we all have different types of engagements, entanglements in this life. It can be related to family, other relatives, our country, our background. And in order to go back, Krishna says that you have to renounce all these. And it is not very easy to denounce or give these things up. So how can we do that? तो ये जो आर्ट है, ये जो सारी क्रिया है, प्रभुपाद ने हम लोगों को सिखाई है. और प्रभुपाद ने सिखाई जिसे उनके डिसाइपल आज करके हमें दिखा रहे हैं, वो सभी लोगों को अपने जीवन में उतारना है. क्योंकि संसार में सारे लोग जीने की आर्ट सिखाते हैं. धन कैसा कमाना है, नाम कैसा कमाना है, संसार में और कुछ करना है, लेकिन प्रभुपाद मरने की आर्ट भी सिखाते हैं कि कैसे मरना चाहिए, भगवत धाम कैसे जाना चाहिए. क्योंकि भगवत के धाम जाना इतना ईजी नहीं है. भगवत गीता में भगवान कई बार कहा है कि देखो अर्जुन, सब कुछ तो करो, लेकिन जब तक फुल्ली कृष्ण भावना भावित नहीं होगे तब तक तुम मेरे पास नहीं आ सकते. So we can see Srila Prabhupada has taught us the method of how to go back home, back to Godhead. And especially we can see by his disciples and his followers who follow in his footsteps. Usually in our day-to-day life or in the world nowadays, there are many organizations and other things that teach you how to live or make a living, how to become famous, how to earn a lot of money, how to lead a nice, prosperous, comfortable life. But Srila Prabhupada has taught us how to leave this world also, the art of dying. And in Bhagavad Gita, Krishna says to Arjuna that you can do whatever and everything, but you have to
be fully Krishna conscious in order to return back home, back to me. तो इसीलिए जैसे पद्म पुराण में बताया गया है कि भगवान का जो धाम है वो गोलोक धाम है और उसके नीचे बहुत सारे धाम हैं। देवी धाम है, अन्य देवी देवताओं के लोक है, चंद्रलोक, सूर्यलोक, वरुण लोक, जैसे भी अनेक अनेक धाम है। इन धामों को पार करके जाना है और ये सभी बीच में बाधाएं जैसी है। कोई व्यक्ति किसी प्रकार से फंस जाता है, इसके बारे में प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं। जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि मैं एक एजेंट हूँ, और जैसे कोई व्यक्ति किसी ट्रैवल्स के पास जाता है टिकट लेने के लिए और कहता है कि मुझे अहमदाबाद जाना है या दिल्ली जाना है तो मुझे टिकट दीजिए, तो ट्रैवल्स तो टिकट देता है, लेकिन वो कहता है कि भाई देखो एक ही शर्त है, गाड़ी से उतरना नहीं। अगर गाड़ी से उतरेगे तो तुम रह जाओगे उसी स्टेशन पे। रूपा जी ने भी यही कहा कि मेरे जब कृष्ण भावना में जब ज्वाइंट हो गए तो वन वे है, पीछे नहीं जाना है, और वो जब मेरी गाड़ी में जब बैठोगे तो नीचे उतरना नहीं है। तो अगर भगवत धाम जाना है तो हम लोग को पूरा पूरा डिटेल के साथ में आगे बढ़ना है। So, in this whole planetary system, in the Padma Purana, it is mentioned that the abode of the Lord, the Supreme Personality of Godhead, Lord Krishna, is Golok Vrindavan, which is the topmost planetary system. Below that, there are various other planetary systems as well, which belongs to Devi Dham, Lord Shiva, many other demigods, and even many enlightened beings. Their planetary systems are also there. So we have to go through all of these. But if we get attached to or we stop at any of these places, then we will be stuck. So just like if you want to go to some destination, we go to a travel agent and we book a ticket to go by train. The travel agent gives us a ticket to go, suppose from here in New Orleans to maybe Chicago. Then on the way there are going to be different stops. If we get off at another stop, that is not going to be the travel agent's fault. It is our fault. So we have to stay in the train until we reach the right destination. So therefore, Srila Prabhupada also says, I am like an agent. I brought this, you all come and stay in this till the end, and you'll definitely reach the destination. क्योंकि भगवान का जो धाम है वो शाश्वत है, सनातन है। भगवान कहते हैं मैं हूँ सो जीव लोक है जीव भूत सनातनम मनशिष्टान इंद्रियानि प्रकृतानि का सती। इस संसार में जब जीव आया है तो संसार की जो माया है इसका आकर्षण इनको लगा हुआ है, सभी जीवों को आकर्षण लगा हुआ है। तो इस आकर्षण से जीव संसार में फंस जाता है और फिर आगे नहीं बढ़ता है। So the abode of the Lord is transcendental and eternal. And in this material world, which is completely opposite, there is some attraction which is created by the illusionary potency of the Lord, which is Maya. And because of that, all the living entities, we are attracted to this show bottle or the shining of the illusionary energy. And therefore, we are all entangled here. तो इस संसार में ऐसे ऐसे जंगल बने हुए हैं, कर्षति अपनी इंद्रियों के चलते। वैसे हम शुद्ध आत्मा है। प्रभुपाद कहते हैं कभी कभी वर्षा ऋतु में आप खड़े रह जाइए और अपने जो घर के वेदी का जो वाटर है, पानी है, इसको पकड़ लीजिए हाथ में, तो देखिए क्रिस्टल वाटर है, एकदम प्योर पानी है। लेकिन वही पानी जब धरती से मिल जाता है तो चिकड़ बन जाता है, अर्थात उसका रंग बदल हो जाता है। तो सेम लाइक संसार में जो आए हम लोग भगवान के शुद्ध है। मम्मी आऊं सजीव लोक के जीव भूत सनातनम मनशिष्टान इंद्रियानि। मनशिष्टन इंद्रियानि मतलब हमारी जो इंद्रिय है, कर्म इंद्रिय है, ज्ञान इंद्रिय है, इन इंद्रियों के चलते हमें संसार में फंस जाता है। इसीलिए भगवान बताता है कि इसी समझने की बात है कि जब जीव संसार में जब आया है तो शुद्ध था, लेकिन संसार में आने के बाद वो कुछ रस फंस गया है। So we are all pure beings which are part and parcel of the Supreme Personality of Godhead. Srila Prabhupada gives the example of a drop of rainwater. When the drop of rainwater falling from the sky is caught in the hand, is as pure as and crystal clear and is
drinkable. But that same drop of water, when it falls or touches the earth, falls on the ground, it, it immediately becomes not drinkable or impenetrable. So similarly, all our souls, our spirit souls, we all appear in this world as pure, part and parcels of the Lord. But when we come in contact with this material nature, in contact with these senses that we have, that is when we become entangled in all this illusion. तो संसार में हम आए हैं, भगवान का धाम जो है वो शाश्वत है। हाँ, न तद्भाषित सूर्य न शशंक न पावका यद गत्वा निवर्तन्ते तद् धाम परमम मम। शाश्वत धाम है, वहां पर ये लाइट की आवश्यकता नहीं है, फैन की आवश्यकता नहीं है, या किसी चीज की आवश्यकता है, वो अपने आप दिव्य है, चिंतामणि धाम है। तो ऐसे धाम में जाने के लिए हमें कुछ तो प्राइज ये करना पड़ेगा, और इसीलिए मनुष्य शरीर जो मिला है, जो अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म को जिज्ञासु करने के लिए मिला है। अगर और कुछ काम के लिए मिला है तो प्रभुपाद 1000 बार गीता में, भागवतम के सभी परपोटों में लिखते हैं, ये शरीर जो मिला है सिर्फ तपस्या के लिए मिला है। वो भरत महाराज के पिताजी का जो लेखन है, वो कहते हैं ऋषभदेव अपने पुत्रों को जब शिक्षा देते हैं तो कहते ये शरीर खाने पीने के लिए नहीं मिला है, तपस्या के लिए मिला है। So the transcendental abode of the Lord is eternal, and there is no need of a sun or moon or electricity or anything to light that place. There is no need of anything. Everything is ever existent over there. So to go to such a place, of course, there is a special price that you have to pay. And that special price is by using this human form of life in practicing Krishna consciousness to go back home, back to Godhead. This human life is not being given to us to eat, simply eat, drink, and be merry. It is meant for tapasya, as was recommended in the Srimad Bhagavatam by Rishabdev to his son King Bharat. So similarly, this human form of life is given to us, and Srila Prabhupada has mentioned this in many purports, many places, that this human form of life is given to inquire about the absolute truth. तो इसी संसार में हम है, और यहाँ पर भी हम लोग 4 या 10 आदमी बैठे हुए हैं। हम लोगों ने कोई 50 साल का है, कोई 60 साल का है, कोई 40 साल का है, कोई 20 साल का है। अब बताइए कि हम लोगों ने कौन सी टिकट ली है? यहाँ से अगर जाना है हमको किसी कंट्री में या किसी जगह जाना है तो पहले टिकट लेनी पड़ती है। तो कौन सी टिकट हमारे पास है जो हम भगवत धाम जा सकते हैं? क्योंकि वहाँ टिकट के बिना हम नहीं जा सकते हैं। इसीलिए अगर इस संसार में आया है तो भगवान का कभी कभी विश्व रूप देखिए तो नाभि में स्थित हम लोग है। भगवान की जो नाभि है ये भूलोक कहा जाता है, और यहाँ से ऊपर के लोग, जनलोक, तपलोक, महरलोक, सत्यलोक, वैकुंठ लोक आदि, गोलक वृंदावन आदि है, अतल, वितल, तलातल, महातल, रसातल आदि नरक आदि लोक नीचे है। तो हम कहाँ जाना चाहते हैं, कैसे इसका ठिकाना समझे हम लोग? So we are all assembled here, different age groups, and we all have to decide where do we all want to go. Like we can see, if we even want to go to some country or different destination, we have to get a ticket. Similarly, if we see the universal form of the Lord in the Bhagavatam or the Bhagavad Gita, we see at the navel is where this earthly platform is situated. Above, there are 7 planetary systems going all the way up to Brahma Loka and Kailash and Vaikuntha Loka as well. And below are all the nether regions going down to the hellish planets. So from here, we can go everywhere. Now we have to decide where we have taken the ticket to go to. Where do we want to go? तो जैसे मैं कभी कभी मुंबई में जब मेरे लाइव मेंबर्स को मैं लेक्चर देता हूँ तो मैं कहता हूँ कि भाई देखिए, ये जो जगह है, प्रभुपाद ने जो जगह बना है, ये एम्बेसी है। और हम लोग एक प्रोग्राम बनाया, दीक्षित प्रोग्राम बनाया है। उस प्रोग्राम में हम लोग पासपोर्ट देते हैं, वैकुंठ पासपोर्ट के नाम से एक पत्रिका देते हैं सारे भक्तों को, न्यू भक्तों को, और जो भी कांग्रेगेशन है, और उनको लिखवाते हैं कितनी जपा किया है, कितना क्या किया है, कितनी शिव सर।
तो मैं कहता हूँ कि ये जो जगह है ये एम्बेसी है। अगर किसी को गोलोक वृंदावन जाना है, भागवत धाम जाना है, तो यहाँ से ही जाना पड़ेगा, अन्य तो कोई जगह नहीं है। क्योंकि भगवान की भक्ति की है, भगवान कहते हैं जब तक मेरी भक्ति नहीं करोगे तब तक कुछ कभी तो मेरे धाम को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो इस एम्बेसी से जाने से ही हमें भगवत धाम जा सकते हैं। So when I preach in Bombay, especially to my life members and other devotees there, we have a wonderful program there called the Bhakti Vriksha. And in that, all the attendees, they are given a small booklet which is like a passport to Vaikuntha. And in that booklet, they track their daily sadhana, or how many rounds they chant every day, how many books they read, and how many classes or lectures they've been listening. And so this booklet is given. And so I tell them that our organization is like an embassy. So through here, we can collect all our sadhana or all our bhakti that we do together, and we can go back home, back to Godhead. So without doing devotional service or without surrendering unto the Lord, we cannot go back home, back to Godhead. ये जो कृपा है, ये जो सारी बातें हैं, ये हमें किसी को पहले पता नहीं था। हम लोग अज्ञानी थे, संसार में पड़े थे, न जाने क्या क्या कर रहे थे। लेकिन अभी जब प्रभुपाद की छत्र छाया में आने से सारी बातों का खुलासा हो गया है कि किस प्रकार से भगवत धाम जाना है और क्या करना चाहिए। और इसीलिए डिटरमिनेशन के साथ में ये सब करना है और आगे बढ़ना है, भगवत धाम जाने के लिए तैयारी करनी है। क्योंकि ये प्रभुपाद जी ने सभी के युग में कहा है कि एक लाइफ मुझे दे दो भाई, ज्यादा नहीं चाहिए, एक लाइफ, ये लाइफ सिर्फ मुझे ऑफर कर दो, बस सबको तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। So before, we were all naive and ignorant. We didn't know what was the process of what we had to do with our life. We were doing many other things. But by the mercy of Srila Prabhupada, he has so much simplified and given us this Vedic knowledge and shown us the path to go back home, back to Godhead. So we should determinedly follow this process and this path, and definitely this will help deliver us. और सिंपल चैतन्य महाप्रभु की जो वाणी है, ये प्रभुपाद जी ने हमको समझाई। क्योंकि हम लोग नहीं जानते थे, खासतौर पे मेरी बात लो, मैं महाराष्ट्र से, मेरा जीवन है महाराष्ट्र में, मेरा मातृभूमि महाराष्ट्र है। मैं कभी नहीं सुना था चैतन्य महाप्रभु का नाम, लेकिन प्रभुपाद के सन्निधि में आने से मैं सब कुछ जान गया। चैतन्य महाप्रभु कौन है, भगवान कौन है, किस प्रकार से भगवान के सानिध्य प्राप्त किया जाता है, ये सारी बातें प्रभुपाद ने हमको सिखाई। और ये जो बातें जब हम सीखते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, तो हमें परिपक्व होकर हमें इस बात को आगे लेके जाना है और बैक टू होम, बैक टू गॉड ही जाना है। So by the mercy of Srila Prabhupada, we have got so much knowledge. Just for example, take me. I am born in a village in Maharashtra. And before I came to this movement, or before I read Srila Prabhupada's books, I did not even know who Sri Chaitanya Mahaprabhu was. Even though being brought up in a Indian Hindu family. So we can see that all this knowledge and everything is provided so easily. And today, all over in the West also, people are knowing about Lord Chaitanya Mahaprabhu. इसी प्रभुपाद की कृपा है। प्रभुपाद जी ने सबको चैतन्य महाप्रभु फ्री में दे दिया है। और प्रभुपाद जी चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति इस संसार से निकले। वैष्णव जनिए ते कहिए पीर पराये। जब वैष्णव होते हैं वो पर दुखी दुखी होते हैं। प्रभुपाद जी वृंदावन में थे, क्या आवश्यकता थी यहाँ पर आने की। और प्रभुपाद जी ने कहीं कहा भी, मैंने एक लेक्चर सुना प्रभुपाद जी ने लंदन में लेक्चर देते हुए, कि वहां पर एक बड़े कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे। तो वहां पर एक प्रिंसिपल ने उनसे पूछा कि प्रभुपाद is telling everything, but why you coming from America and why coming London for you doing this preaching? Why not go to other place? तो प्रभुपाद ने कहा कि अरे तुम भूल गए हो कि तुम इंडिया में राज किए 30 साल, 25 साल, 40 साल, और वहां से सब कुछ लूट के लेके आए, लेकिन एक चीज तुमने लाना भूल गए, और वो मैं देने के लिए आया हूँ। ये आपको प्राप्त हो जाएगी तो आपका जीवन कल्याण हो जाएगा। So Srila Prabhupada has been very, very merciful in giving all this to us. Srila Prabhupada was staying in Vrindavan. He didn't have no need to come out and
give Chaitanya Mahaprabhu or preach about this to everywhere else. He was in the best, most holiest place in the world. But yet he came out. There is an interview I heard in London where a journalist was asking Srila Prabhupada that why have you come here to London? And so Srila Prabhupada said that the British, they ruled over India for many years. They were in India for many years. They've taken a lot of things from there, but they have forgotten to take one thing, and which is this transcendental knowledge. That is what I have come to give here. And if you will have that, that is our most treasurable object that we have. And if you have that, your life will also become successful. इसीलिए प्रभुपाद को एम्बेसडर कहा जाता है, इंडिया के बहुत बड़े लोग ऐसे। तो इसी जो चीज है ये श्री भगवान ने दी दी हमें, प्रभुपाद की कृपा से चैतन्य महाप्रभु ने हमको दिया है। और चैतन्य महाप्रभु ने जीवों पे बहुत दया की है। चैतन्य महाप्रभु वैसे दानी अवतार है, नमो नमः औदन्याय कृष्ण प्रेम बदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर से नमः, तार साक्षी जगाए मगाए। हमसे पतित जीव जो कि चैतन्य महाप्रभु ने उद्धार किया और इसी प्रकार से अपने जीवन में कृष्ण भावना को हम लोगों को दे दिया। चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति इस संसार से पार हो। So Srila Prabhupada has given us Chaitanya Mahaprabhu. Who is Chaitanya Mahaprabhu? Chaitanya Mahaprabhu is the most merciful, most munificent incarnation of the Supreme Personality of Godhead. And his very desire is that each and every one of us, each and every living entity, return back home, back to Godhead. And therefore, he has delivered everybody, even the most fallen Jagai and Madhai. We hear about the story, and even they who were way more sinful than all of us, even they were delivered by the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. जैसे मैंने अमेरिका आने से पहले मैं सुना था कि अमेरिका में बहुत 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 कठिन है, यहाँ पर खाने पीने के लिए, रहने के लिए, बातें करने के लिए सब कुछ। लेकिन मैं करीब करीब 3-4 या 5 बार अमेरिका में एंट्री किया तो मैंने देखा, और भक्तों के संग में जैसे मैं हवाई में भी गया, वहां पर भी कितना आनंद, क्योंकि सारे भक्त है वहां पर। और यहाँ पर आने के बाद, न्यू ऑर्लिन खास कर यहाँ पर आने के बाद तो मुझे बिल्कुल फील नहीं होता है कि मैं इंडिया में हूँ, क्योंकि वैसे मैं हाफ बंगाली हूँ, मेरी वाइफ बंगाली है, तो मुझे बंगाली ही खाना मिलता है। लेकिन यहाँ पर भी हर घर में बंगाली खाना मिलता है, तो हम ये फील नहीं करते क्योंकि सारे भक्त है यहाँ पर। ये सारे जो भक्त है, ये सारे भक्त इसी प्रकार से कृष्ण भावना में लगे हुए हैं। So many times, especially from our Indian community, we feel when we come to a foreign country, especially like America, we feel very isolated. We don't have much people to speak to or places to go around outside. But when I came here, I also heard about it and I was a little scared. But when I came here, a few times I've been here and other places as well. And because of our devotee community that we have all over, especially in Hawaii, also I saw, and here also in New Orleans, I don't even feel that I am outside of India. There's so much loving families and friends and everybody around Krishna consciousness. They are practicing so wonderfully over here that I feel like I'm in Bengal. A lot of Bengali devotees here, so I feel like I am in Bengal. इस प्रकार से तो कहने का तात्पर्य है कि प्रभुपाद ने कितनी सुंदर लाइफ हमको दी है, कितना सुंदर चीज दी है हम लोगों को, जो कि हम एक साथ में रह कर सब कर सकते हैं और भगवान के धाम जा सकते हैं। भगवान के धाम जाने के लिए बहुत ईजी कर दिया हम लोगों को, क्योंकि संसार में सब कुछ चीज है हमारे पास, लेकिन सब चीज हम भगवान के सेवा में अर्पण करते हुए भगवान के धाम जाने के लिए हमको इसका सहयोग प्राप्त होता है। ये सब प्रभुपाद की कृपा है। और इस जीवन में हम सभी लोगों ने इस ऋण को उतारना है। कौन सा ऋण है? प्रभुपाद का। प्रभुपाद ने कहा कि जो कुछ मैंने अकेले नहीं किया वो आप सबको, तुम लोग सब मिलकर तुमको करना है। और सब घरे घरे थाको वने थाको सदा हरि बोले थाको, सबको प्रचार करना है। जो भी आपको मिले उसको कृष्ण भावना में लाना है। So this is the blessing of Srila Prabhupada. We can see that even if we are somewhere out
we can take everything, whatever we have, and we can engage our lives in Krishna consciousness. And Srila Prabhupada has asked that please, if you can, repay this debt. You have, what is Srila Prabhupada's debt? Srila Prabhupada said that I preached, and I want each one of you also to take this and preach forward. Bring more and more people to Krishna consciousness. इस प्रकार मैं सुना कई भक्तों से, मैं जो पुराने पुराने भक्त हैं उनके से सुना था प्रभुपाद ने कितना परिश्रम किया है इस मोमेंट को बनाने के लिए, इतना परिश्रम किया है कि उसकी कोई गणना नहीं है। हाँ? जैसे बॉम्बे मंदिर की बात ले लो, जो बॉम्बे मंदिर बनाया है, आज आप लोग कई विजिट किए होंगे, देखे होंगे, इतना परिश्रम किया है बॉम्बे मंदिर बनाने के लिए प्रभुपाद जी ने कि लिमिट के बाहर। तो कहने तात्पर्य कि ये सब कुछ किसके लिए किया है? हम लोगों के लिए किया। आज प्रभुपाद नहीं है, लेकिन हम लोग एसी ऑफिस में बैठते हैं, एसी कार में चलते हैं, सब कुछ प्रभुपाद ने हमको दिया। तो प्रभुपाद जी जो दी हुई चीज है, ये कृष्ण भावना में योग करनी है। हम लोगों को सबको कृष्ण भावना में बनाना है, हर एक व्यक्ति को कृष्ण के पास बुलाना है। कृष्ण को तब प्रभुपाद संतुष्ट हो जाएंगे, तभी उनका ऋण पूरा होगा। So Srila Prabhupada has done a lot of sacrifices, a lot of hard work to make this movement come up. And we can see, for example, even in our Bombay temple, there is a beautiful, huge marble palace in Bombay, if many of you have visited in ISKCON Juhu. And Srila Prabhupada had worked so hard to get that temple together and put up. For who he has done this? He has done this for all of us. So we should utilize it. We should utilize all this in help him preach this movement forward. And in that way, we'll be able to repay some of his debt and also make our life successful and give Krishna consciousness to others as well. कोई प्रश्न है? So we can take some questions. If anybody have questions online, we are able to check. Or anybody has questions here. I like the example you gave as when a train going to Chicago, but if you get off before you reach the goal, then you have to cut the consequences. That's a very nice example to understand. And also the embrace concept. Thank you. Yeah. A simple way of explaining things how we can. This example given to सर्वभौम प्रभु, सर्वभौम प्रभु आप जानते होंगे कि पता नहीं, सर्वभौम प्रभु को वृंदावन में एक मोटे तगड़े है प्रभु जी है, सर्वभौम प्रभु का लेक्चर कभी सुना होगा आप लोगों ने। तो सर्वभौम प्रभु बहुत बढ़िया बताते हैं, मैं तो इतना नहीं बता पाया, लेकिन उन्होंने इतना सुंदर बताया है कि वास्तविक जो इस्कॉन है वो सबको भगवताम लेके जाने के लिए है। एवरीबॉडी गो टू बैक टू होम, बैक टू Godhead। तो सर्वभौम प्रभु बहुत बढ़िया सुंदरता से बताते हैं कि कैसी एम्बेसी है और यहाँ कैसे कैसे लोग हैं जो क्या मिनिस्ट्री, जैसे एम्बेसी में जाके पहला पासपोर्ट देना पड़ता है और कुछ करना पड़ता है, इसके बाद तो सारा कुछ इधर होता है, लेकिन वो आध्यात्मिक बात से। So I just gave you a gist. This is an analogy that His Grace Sarvabhauma Prabhu uses. Sarvabhauma Prabhu is a wonderful devotee. He lives in Vrindavan. He's actually born in Pakistan, and he's a doctor from there. And he joined Krishna consciousness movement, and he's made his entire family devotee. And he even preaches in Pakistan. I think right now also as we speak, he is in Pakistan. When we last, there's a lot of his lectures, and so he has very nice, funny way of relating Krishna consciousness. So he made this whole analogy of how the whole Krishna consciousness movement is like a passport office, like an embassy, how and all ministers and all also he had. So I just gave a little gist of it. Anybody else have any questions? Hare Krishna. If anyone has any questions on Zoom, please feel free to unmute, or any realizations you'd like to share. That's Anyone it. from here would like to ask any questions? ठीक है। Can I
I cannot talk to here, right? Go ahead. Hare Krishna, Radha Krishna Prabhu, thank you so much for your wonderful class. Actually, 2 years ago, I missed flight. So I'm relating Prabhu's class, and I have to stop by at Juhu temple. And Prabhu actually took care of us. So how? So I didn't feel I missed the flight. My whole family is actually stayed a couple of days, and we got mercy of Ram Lakshman Sita Hanumanji, Radha Rajbihari, and Gaurnitai. And Juhu temple, one of the best temple in this world. And Prabhupada mentioning this Juhu temple is my office, Mayapur is my home, and Vrindavan is my worshipping place. So 3 places is very, very special. And Prabhu is doing lot of service over there. His entire family. Prabhu's son Gopal Radha is here. His another son is Viveki Kirtaniya. So they are so dedicated, they sacrifice their life for whom? For Prabhupada. To preach to Prabhupada mercy carrying all over the world. So we are so fortunate today. So I am so grateful. Prabhu mercifully came here to give us blessings so we can preach in Baton Rouge. And Baton Rouge is such a great place. So many devotees are cooperating. They are helping to preach. Like today here in person, Dr. Madan Kundo, Mr. Koilaji, Mother Manji, and Shomita, and so many people are in the Dome. Dr. Sudhir Trivedi, Dr. Ravi Dhawanji, Jason, and Rico always attending our programs. I'm so grateful, all of you, and Dr. Ashish. I think Radha Saran Prabhu also here. He's one of the pioneers. And Mira Mataji. So please give us blessings so we can contribute a little bit in Baton Rouge area by your mercy, and we can preach by your help. So thank you so much. So every program they are joining, they are supporting us to preach this Baton Rouge area. So, and Gopal Radhe, I also am so grateful to Gopal Radhe Prabhu. Actually, once we start the program 3 years ago, actually Gopal Radhe came here to inaugurate that place. So always he's supporting us, always he's giving us advice. So thank you so much. Hari Bol. मैं तो सबसे विनती कर रहा हूँ जितने प्रभु जी ने नाम बताए इस सभी से विनती कर रहा हूँ कि आप एकत्रित हो जाइए और भव्य भव्य मंदिर यहाँ पर उपस्थित कीजिए। ये नामहट्टा का जो प्रचार है ये भक्तों के माध्यम से हो रहा है और आप सभी लोग भक्त जुड़े हुए हो तो एक ऐसा सुंदर जगह बनाइए जिसके अंदर से हम सभी लोग भगवान का, वैसे ये घर भी तो मंदिर ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जहाँ पर हम स्वतंत्रता से भगवान का दर्शन भजन कर सकते हैं। तो मेरी यही विनती है आप सभी लोगों से, सुनने वाले से जितने भक्त जुड़े हुए हैं आज यहाँ पर इस जगह पे, तो एक ही विनती है कि आप सभी लोग मिलकर भगवान का एक मंदिर छोटा बना दीजिए। तो नेक्स्ट टाइम जब पता नहीं मैं कब आओ तो उस मंदिर में एंट्री करूँ। हरे कृष्ण। Yes, so it's my humble request to all our audience today. Prabhuji said names of many devotees who are assembled here in the house as well as online, that please all of you come together and help Sarvatar Prabhu establish a nice wonderful preaching center or temple here in Baton Rouge, so that everybody can come and we can preach much more nicely to more people, accommodating many more people. Of course, there's a very beautiful house here and we have a very small nice preaching center, but still the more we do, and that will be our special gift to Srila Prabhupada also. So please, my humble request is please come forward all together and help put up a nice wonderful preaching center over here. And hopefully when I return next time, I don't know when that will be, hopefully I'll be able to come and see that center. Hare Krishna. क्योंकि भगवत गीता में 12वां अध्याय पढ़िए आप लोग, उसमें लिखा है, प्रभुपाद जी उस परपोर्ट में लिखते हैं कि एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। मैं भी जब अमेरिका गया, प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब अमेरिका गया
तो अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर पाया, लेकिन इन सभी मेरे जितने डिसाइपल्स है, विदेशी डिसाइपल, ये सभी मिलके मुझे हेल्प किए, तभी जाके मैं मेरे गुरुजी की जो वाणी है उसको मैं सक्सेस कर पाया, और साथ साथ में चैतन्य महाप्रभु की वाणी को भी सक्सेस कर पाया। आज जो कुछ हो रहा है ये सभी आप लोगों का अफर्ड है, सभी आप ही लोगों ने मदद की हुई है। तब ऐसा है कि जैसे 12वें अध्याय में लिखा है कि धन की आवश्यकता पड़ती है, जमीन की आवश्यकता पड़ती है, परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है, तो सभी प्रकार से भक्त जुड़कर भगवान का सेवा कर सकते हैं। कोई धन के माध्यम से, कोई मन के माध्यम से, कोई तन के माध्यम से, सभी करके एक छोटा सा मंदिर तैयार कर सकते हैं भगवान का और भजन कर सकते हैं। हरे कृष्ण। So, in the 12th chapter Bhagavad Gita, in the purport, Srila Prabhupada writes that one person single-handedly doing is very, very difficult. A task such wonderful and such great as this. So, it requires help from everybody. He gives his own example that when he first came to the United States in the 1960s, alone, single-handedly, it was very, very difficult for him. But by the mercy of his spiritual master, many young boys and girls joined him, his disciples, and they all helped putting forward this great successful movement. So there is requirement of land, there is requirement of funds, there is requirement of intelligence, there is requirement of organization, and even of manpower. So all this requires a lot of different people. So all of you all can come together. Some can help with finance, some can help with building, some can help with various ways. Everybody has different talents which one can use in the service of the Lord. So please come together and you can establish a small wonderful temple here which will please the Lordships, Radha and Krishna, as well as Srila Prabhupada and all the devotees. प्रभुपाद जी ने अपने बेटे के माध्यम से एक पोते को भेजा है आपके हाथ में, तारक प्रभु। सर्व तारक की मीनिंग जानते हो आप लोग सब? सर्व तारक क्या होता है? जो संसार से सबको भवसागर से पार करे। सिंपल सा मीनिंग है, जो संसार सब सभी भवसागर को पार करे। तो ऐसा व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित है और परिश्रम कर रहे हैं। तो आप लोग सभी लोग सहयोग करोगे और अपना अपना उद्धार कर लोगे। धन्यवाद। लास्ट हरे कृष्ण। So Srila Prabhupada has very mercifully sent one of his grandsons here, His Grace Sarvatarak Prabhu, amongst you all. And do you all know the word meaning of the name Sarvatarak, or what name he has? It means one who delivers everyone. So this wonderful person is sent here by Srila Prabhupada. So please help, support him. He's working very hard to make this movement and make this preaching center here. So please come forward, help him, so that we can deliver everybody here. Hare Krishna. हरे कृष्ण। एक बार बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अभी आरती होगी, अभी आरती का आनंद लीजिए। Actually, I forgot Lakshman Prabhu's name. Actually, Krishna sent him last 2 years. He has been working like the more than me, you know. He is working here, helping here. He's helping also our preaching in the university, book distribution, prasadam distribution. I don't know how it happened. Krishna sent him to help this. So thank you, Lakshman Prabhu. Thank you, Lakshman Prabhu. Hare Krishna. Krishna sent also Samita. Thank you so much, Prabhuji, for such an enlightening class. We feel very, very blessed to hear from you. And we request you to please keep on coming here and giving us your association. Thank you so much. So now we're going to move on to the final part of the program, which is Aarti. Just give us one moment. I'm going to set up the